guys, welcome to another video of Vampyr. This is the second part and I'm gonna make more videos about story mode games because live streams में ज़्यादातर हम लोग वो वाले games खेलते हैं, battle royale like Fortnite or any other multiplayer game. So yeah, let's hit it and I hope you guys enjoy it. So चालू करते हैं boys. तो हमारा बंदा हो गया लेवल 4 का. C से हम लोग वो कर सकते हैं. TG में कुछ भी सेव नहीं है. एक मिनट, मैंने इसका वॉल्यूम नहीं चलाया है. Oh my god, amazing music. Cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. ये कौन I बात कर cannot रहा है? enter. Your city needs you. Volunteers make difference. ये तो हमारा डॉक्टर है. It's locked. इसे सारी Good बातें कर evening, चुके थे हम Dr. लोग Reed. लास्ट टाइम. Such a pleasure to see you again. हे राकेश चंदाना, लेट्स ट्रेड. नहीं भाई, अभी चलते हैं Goodbye, back. Mr. Chidana. चडाना, मिस्टर चडाना. चलो गाइस, ऑब्जेक्टिव गेमिंग करते हैं फटाफट. अपने ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं. लेट्स कंप्लीट दिस गेम. साइड ऑब्जेक्टिव, साइड क्वेस्ट करेंगे लेकिन थोड़े कम. फर्स्ट लेट्स लेवल दिस गाय अप. लेवल अप करके उसके बाद देखते हैं. ओह माय गॉड, एवरीबॉडी हियर इज डेड बॉयज. शिलिंग्स उठा ली इसने. This thing is 11 meters away. ये Y वाला आइकन जो है 14 meters away. इधर से उधर जाने का रास्ता कहाँ है? हाँ, यहाँ है. And you may kindly apologize when you're feeling better. Good evening, sir. Doctor. इससे बातें करते हैं. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer. Goswick. Q से mesmerize नहीं हो सकता. R से for details. अच्छा, okay. E से Do you need medical any check-up. help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Okay. F से details लो. Blood quality, treatment for fatigue. Fatigue है इस बंदे को. Okay. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And This you is have nice. my gratitude for that. Personal questions. Tell me about Tell me yourself. about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. Fair enough. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let Chalo, you theek get hai. some rest then. I'm all right. टाइम खराब कराया इसने हमारा. ये कौन है? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Okay. Could you check on him, please, Dr. Reed?
I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll Mortimer cover कैसा all the नाम है? expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. अच्छा जी. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Okay. चलो, complaints about your reception What here. do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? You ain't available. Waitress questions the Pembroke Hospital's efficiency. Okay. इसकी blood quality 2600 है. Okay. Mortimer Goswick, इसकी तीनों hints unlocked है. Social circle इनका ठीक है. Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first Mesmerize impression? किया हमने The इसको. ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Hint unlock. Paper saves beds for patients who can pay. Oh, okay. She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Okay. ये तो हो गया सब. एक हिंट अनलॉक भाई. Your life in London. ये हो गया. Personal questions cannot. Goodbye, Mrs. Goswick. चलो चलो. Don't waste your time with me. तुम्हारे पास कुछ मिलेगा हमें. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. कुछ अनलॉक हुआ है. हाँ. अच्छा, हम लोग mesmerize कर सकते हैं इसको. About your hospitalization. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. Nah. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Okay. Is your mother bothering you? No, you're in good Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. Achha. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. That would be like bye mother, guys. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Okay. We need more hints. We cannot mesmerize him. Cure with this green thing. Treatment for fatigue के लिए मेरे को वो लेकर आना है इसके लिए फिर कुछ. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. अरे मैंने वापस I कर don't दिया. mean to be a burden. Don't give medicine. I will see you later. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. I will not
can't let you down, my boy. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Oh my god. Level 4 पे होगा ये mesmerize. Do you have a problem? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met इसको before, चाहिए था ये but I वाला. believe this hospital could Position. use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Jealousy will not do any good to you. अच्छा we have to choose between 3. ये देखो Y वाला आइकन है तो इनमें से ये 3 में से डिसीजन मेकिंग हो रहा है. You better change your tone with me. इसको झाड़ देते हैं या फिर jealousy will not do any good. No need for such an. ये एक काम सीधे इसको झाड़ देते हैं. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will Achha. speak to you the way I want. Oh. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Experiments. Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay, new hint available. Waverly disapproves modern medicine methods. Okay. Personal questions. I have proved my value as a practitioner. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. I have saved many lives. Knowledge is our main weapon. No reason to justify my actions to you. Okay. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Your life in London पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते इससे personal questions भी सारे हो गए चलो goodbye. Thank you for your time. We'll talk later. Find your office on the second floor. Find out who is spying on Thelma. ये 2 काम करने हैं. पहली बात सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता ढूंढो. मैं 3 बार इसके अंदर बाहर हो चुका. सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता कहाँ से है? ये क्या लिख बाहर का पोस्टर छोड़ो. इसकी आंखें कितनी खतरनाक हैं. गाइस इसकी आंखें कितनी खतरनाक है यार. बहुत ही खतरनाक है.
I thought ये डरावना गेम होगा, but this is more like a story mode game. But the suffering continues. On every street corner. Find your office on the second floor. चलो चले. First floor, second floor. Let's go. अबे भाई सेकंड फ्लोर आ तो गया, अब इसको खोलेंगे कैसे? ये वाला नहीं है. Not now! डॉक्टर स्वांसी है ये. ये वाला डोर अनलॉक्ड है, लॉक्ड है. It's locked. इसके बगल वाली ये वाली सीढ़ी लग रही है मुझे. अबे ये भी नहीं है. एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है? सेकंड फ्लोर लिखा है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे घुसने का रास्ता कहाँ है? आगे से भी रास्ता है क्या सेकंड फ्लोर का? This must be the place. Hideout unlocked. It's New definitely hideout. away from prying eyes. Okay. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. This is his office. Second floor पे था office. इसमें लिखा था, गलत लिखा था. ये तो first floor है. Analyze William Bishop's blood at the workbench. Wrong target. Find out who is spying on Thelma. Okay. Aluminum powder, shillings. Refill all. Okay. यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए? ब्लड सैंपल ऑफ विलियम बिशप. एनालाइज करते हैं इसको. 2 सीरम के वो मिल गए, वायल्स मिल गए. ये क्या है? एन एनिग्मेटिक फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर सीम्स कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स टू बी एनालाइज्ड. एनालाइज्ड टू व्यू ब्लूप्रिंट्स. ओके, we got 2-3 more blueprints. But where are these guns getting stored? मैं guns वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं लेवल अप तो कर ले रहा हूँ, यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? Used scythe, two-handed weapon. मुझे अभी भी समझ नहीं William आया. Bishop's blood is much more इसमें लिखा होगा ना गेम प्ले में. सेट की बाइंड नीचे आओ जरा. एक्शन एंड फाइट. स्विच टू मीली वेपन. नॉट इन फाइट में ठीक है. अच्छा, फाइट मोड में जब रहेगा तभी गन निकालेगा. stable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Okay. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. ग्लास वायल मिल गए. Article on econs. It is a rare opportunity and almost a privilege to approach a vampire to observe their most intriguing physical and psychological traits with a scientific and rational eye. Here are some of the most fascinating abilities I have personally observed over the last 10 years while interviewing a few vampires, or econ as they prefer to call themselves. Supernatural speed. A vampire can act and move like a mortal in all his actions, but the trained eye will spot that they have the keenest sense and can react quicker than any mortal. On a few occasions, alarm, surprise, necessity to flee.
Okay. I have seen a vampire move so quickly it is almost as if he had vanished just to reappear somewhere else. हाँ ये हम लोग करते हैं ये लास्ट वाले एपिसोड में मैंने किया था मतलब while fighting or something. The human I cannot follow their movements when they act so quickly, but it is not a teleport or dematerialization. It is only a supernatural speed. For me, it is a cat-like attribute which allows them to run, dodge, or jump longer and faster than us. I also noticed that such speed seems to exhaust them and that they are bound to physical limitations. Mesmerization उसके बाद. Mesmerization. One of the most powerful abilities a vampire can deploy is the capacity to force a mortal to obey them. I call this trait mesmerism, but it has nothing to do with the mortal ability after subject's mental state. A vampire can bend a mortal to their will and they can even break a mind. A vampire I interviewed even told me the more a subject tries to resist, the more permanent the damage will be, as if the vampire could. आगे नीचे क्यों नहीं हो रहा? मैं तब से इसीलिए परेशान हो रहा था. Bring down. अभी article on econs. Not this. Not this. कहाँ गया? अभी तो लिया था मैंने, उठाया था. ये वाला तो हो गया मेरा. I don't know. इसके वो गायब हो गया. सही में गायब हो गया वो. सो लेट्स गो एट बॉयज. हम लोग रेस्ट करते हैं अपने बेड पे. यहाँ पर कहीं और कुछ कलेक्टेबल्स हो तो कलेक्टेबल्स उठा लूँ बस मैं फटाफट. इसमें कहीं कुछ नहीं है. let's rest our on let's rest on our bed, man. So guys, let's rest our let's rest on our bed, guys. Let's go. Coagulation, 2 seconds control. You will block your target's blood in their veins, making them defenseless. अच्छा. Cost none. ले लेते हैं भाई फिर इसको. लेने के लिए 600 पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन रुको. और ये वाली एबिलिटी ब्लड बैरियर. यू कैन क्रिएट एन इनविजिबल बैरियर absorbing direct damage until it fades or is destroyed. Recovery 30 seconds. Duration 5 seconds. 1 hits absorbed. नहीं. क्लॉज के लिए लेवल 2 कर सकते हैं क्लॉज अपन. 2000 XP चाहिए. This is blood sprayer. You can throw a spear made of blood which can pass through enemies in front of you. I can get this maybe. और ये थर्ड वाला क्या है? Shadow mist. Place a cloud of shadows at the target's feet or yours. The cloud will explode after a short time, causing heavy damage. I think I have this already. नहीं है, बस claws unlock हुए हैं. Okay. बॉडी के लिए 50 हेल्थ बढ़ा लिए मैंने. फिजिकल प्रोविस इंक्रीज योर स्टैमिना बाय 15%. 300 पॉइंट्स का है. ब्लड कैपेसिटी इंक्रीज योर ब्लड कैपेसिटी. बिग थर्स्ट प्लस 20% ब्लड. इंक्रीज योर ब्लड एब्जॉर्प्शन व्हेन यूजिंग बाइट इन कॉम्बैट. बाइट है मेरे पास. हाँ ये वाला, ये 300 उसका है. फास्ट रीजनरेशन 5% हील. इंक्रीज योर लाइफ रीजनरेशन व्हेन यूजिंग बाइट इन कॉम्बैट. चलो बाइट वाला इंक्रीज करने के पहले मैं ये सोच रहा हूँ ब्लड स्प्रेयर लेना चाहिए क्या मुझे. 1000 पॉइंट्स का है. या फिर एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ बिग थर्स्ट.
बिग थर्स्ट ले लेते हैं, 20% ज़्यादा ब्लड रहेगा, मिलेगा हम लोगों को। 300 XP यहाँ यूज़ किया मैंने, और हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं बॉडी। ब्लड कैपेसिटी, इंक्रीज योर ब्लड कैपेसिटी बाय 5%। नहीं, स्टैमिना इंक्रीज करना चाहिए मुझे, स्टैमिना इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेवल 2। प्रोग्रेस 30% करना है, एंड्योरेंस। बिग थर्स्ट 20% से 40%, 40% ब्लड एब्जॉर्प्शन करते हैं हम लोग। 660 में और क्या मिलेगा? 660 में आई गेस दिस इज़ फॉर 600। ओके, कोagulation ले लेते हैं हम लोग। अगर डिफेंसिव में दूसरा ये नहीं आया तो ये भी 600 का ब्लड बैरियर। ठीक है, कोagulation ले लेते हैं। ठीक है, डन। अब 60 XP बचा है, 60 XP में कुछ आएगा नहीं, सो कंफर्म करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स गो बॉयज। अब हमारा द फॉलोइंग नाइट नेक्स्ट वो चलेगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स एवरी नाइट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस में इम्प्रूव और डिग्रेड द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ स्टेटस। It can also be degraded due to diseases spreading among citizens. ठीक है, continue. The more lives you take, the unhealthier a district becomes. If a district's health status drops below the critical threshold, it will plunge into chaos. ये मैं पढ़ चुका पहले भी, ऐसा लग रहा है। एक मिनट, एक बंदा मार दिया है हम लोगों ने ऑलरेडी। क्ले कॉक्स को हम लोग, यू गॉट 500 XP फ्रॉम दिस सोल। बस 500 XP लेकर छोड़ दिया। इंट लॉक्ड, फटीग 30% लॉस ऑफ ब्लड क्वालिटी है। फटीग के लिए मेडिसिन ला के देनी पड़ेगी इसे। सबसे ज़्यादा XP तो इसका है, 6000 XP, लेकिन इसको हम लोग खा नहीं सकते अभी। चलो चलते हैं। Let's go. Second night. Plan to stay here until my research is चालू complete. हो गया ये। I'd better learn to hide my true nature from the mortals. So chapter 1 is finished. What about my finally. thirst for blood? अभी इसकी आंखें अच्छी लग रही है। पेम्ब्रोक हॉस्पिटल में हम लोग फर्स्ट वाला एपिसोड कंप्लीट कर लिया हमने, चैप्टर 1। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 2, या फिर देखते हैं चैप्टर 2 को सेकेंड वीडियो में करेंगे मे बी। लेट्स थिंक अबाउट इट। मैं तब तक इधर पे ये देख लेता हूँ। 6 लेवल का हो गया है हमारा वैम्पायर। कैन वी मेक समथिंग? हम लोगों को ये चाहिए, ट्रीटमेंट फॉर फटीग। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्विनीन चाहिए, फेरस टार्ट्रेट चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए, क्विनीन, फेरस टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, चलो फिर हम लोग यही करते हैं। ये कौन है, किससे बातें करते हैं? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? ये वो है जो अपने आप को वैम्पायर बोल रही है। Rich, vibrant blood. इसको वो करना है ना। Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. ये खुद को वैम्पायर समझती है, कितना फनी है। Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see?
I'll leave you, चलो इसको Mistress बाय of बाय the करते हैं. Dark, to your Let's go to nocturnal main mission activities. please. Answer the door. Night shift. Answer the door. Find out who is spying on Thelma. Answer the door to 25 meter, 22 meter. चलो 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 35 meters, 24 meters. अरे आंसर द डोर को क्या हुआ? Answer to help the Pembroke Hospital to cope up with the epidemic. I have analyzed William Bishop's blood, but the result is only partial. The blood sample was much more unstable than human blood and showed heavy mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. I need to gather more evidences of what is going on. Time may be on my side, but not on London's. The epidemic is killing thousands of people. The whole city is on the verge of collapse. I am starting to believe all of this must be connected somehow, but I can't see any pattern or plausible explanation yet. For now, I must play the doctor and try to do my best to help those who may need me while I continue my search. Okay, घर पे रहने का फ़ायदा, चाय मिल गई मुझे. So guys, chapter 2 has started. कहाँ थे हम लोग? मैंने सॉरी यहाँ पर एक वीडियो पॉज लिया था, ब्रेक लिया था बिकॉज माई मॉम केम एंड लाइक हम लोग चाय पी रहे थे सवेरे की. सो या लेट्स गो अगेन. ये क्या है? मर्चेंट्स में चार्ज देयर वेयर्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर बरोज हेल्थ स्टेटस. ओके, इसको जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं? ये अच्छा. मैप खोलो वापस. कस्टम मार्कर रिमूव, ये ठीक है. आंसर द डोर, हेल्प द पेम्ब्रोक हॉस्पिटल टू कोप विद एपिडेमिक. ये पढ़ लिया था मैंने. लेट्स गो. Still more coming. How can we be sure we're making a difference? 11 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर. I will not let you down. नहीं. कौन है यहाँ पर? तुम्हारा पड़ा है ऐसा लग रहा है. फाइंड आउट हू स्पाइंग ऑन थेल्मा. दोनों चीज़ें देखते हैं. I'm so tired. Will this shift never end? Good evening, sir. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. पिप्पा हॉकिंस है. इससे ये क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ मैं. हिंट रिक्वायर्ड फॉर दिस वन. पर्सनल क्वेश्चंस के लिए भी Goodbye, चलो Nurse बाय Hawkins. कर देते हैं. ये वो वाला डॉक्टर है. आंसर द डोर कहाँ होना है भाई? ये तो क्वेस्ट समझने में भी बड़ा टाइम लग जाता है. फर्स्ट फ्लोर पे है आंसर द डोर. Hurry up. हाँ ये रहा. ये
ये क्या है? डॉक्टर रीड. Hurry now, Doctor. It's freezing here. क्या करना है इसके लिए? ये कौन है? Yes, Nurse Crane? How can I help you? Nurse Crane. I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. Okay, यही था आंसर. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but There is nothing here. This room is off limits. This room is off limits बोल दो इसको. Dorothy Crane, इसके बारे में डिटेल देखो. इसकी ब्लड क्वालिटी अच्छी है. सोशल सर्कल नहीं पता. हेल्दी है ये बंदी. नर्स क्रेन को लपेट दें क्या? पी जाएं ब्लड? पूछता हूँ. नो एंटीसेप्टिक्स एट ऑल. What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance good at the end decision. of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. एक ये शेल्टर की मिली है, एक मॉर्ग की मिली है. चलो बढ़िया. On my way then. Thank you, nurse. आंसर डोर हटा के एंटर द ओल्ड मॉर्ग हो गया. यहाँ से जाने का रास्ता तो है नहीं. नीचे से ही चलते हैं, नीचे से ही चलते हैं. चलो चलो दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ. It's locked, all right. Okay, okay, I know it's locked, all right. अच्छा, स्पेस से वो घूम जाता है. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. चलो. सेकंड लेवल का सवाल है. अरे रे, मार दिया मुझे. डैम मैन, मार दिया इसने मुझे गाइस. We have been defeated. If you're not strong enough, remember that blood of citizens is the fastest way. Ah, something. The loading is also creative ways. वो देखो Y वाला logo होता है. Healthy Pembroke. अरे ये तो लास्ट चेक पॉइंट पे आ गया. डैम. I wish I could be sick again. Stamina.
है. Nicely done, boys. Watery sturdy blood sample मिला मुझे. इसका भी मिला. Photography in a wallet. A photography of a smiling and loving couple with a few words written on the back. Milton and Pippa forever. ये तो पिपा है. पिपा तो हमारी वो है, नर्स है. चलो हम इसको नर्स को दिखा के उससे काम निकालेंगे अपना. अरे ओह नाइस. लाइट स्टिक मिली मुझे. यहाँ पर ऐसे चमक रहा था जैसे कुछ हो. चलो हम लोग फिर चलते हैं वापस मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ. एंटर द ओल्ड मॉक करते हैं. किलिंग दीज स्कैल्स. अरे इससे चलने से ही चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं. भाई साहब कितना पावरफुल है ये बंदा. बहुत ही पावरफुल है. सेकेंड येलो इज द स्टैमिना मीटर. रेड क्या है? रेड समझ नहीं आ रहा मुझे. पावर है शायद. Rest. You must rest in a bed to spend XP and evolve. Look for hideouts. Okay. Pembroke Hospital, the old monk पे पहुंच गए हम लोग. एक तो उसके सारे कंट्रोल्स दिखाता है इसमें Xbox One वाले कंट्रोलर के. Maybe I'll play the rest the game later on जब मैं वापस पहुंचता हूँ घर. तो कंट्रोलर Xbox One का कनेक्ट करके भी खेल सकता हूँ. बट आई एम हैप्पी प्लेइंग ऑन द लैपटॉप विद द कीबोर्ड एंड माउस. यहाँ पर कुछ भी जो मिलेगा उठाते जाना है बस अपन को. ये तो वो है सामने का रास्ता. ऐसा तो ये मॉर्ग के अंदर बहुत सारे वैम्पायर मिले अपन को. कुछ कलेक्ट करने का मिल रहा है यहाँ पर. एंटीसेप्टिक्स नहीं है ना. 5 shillings. ये क्या पड़ा हुआ है भाई साहब? दवाइयाँ. Find useful medicinal ingredients in the old mog. Find some ferrous tartrates, some quinine and some hypochlorite. Sodium hypochlorite. चलो सोडियम हाइपोक्लोराइट और ये सब चीज़ें तो हम लोग बनाएंगे वो उस बंदे के लिए. याद है तुम लोगों को जो बंदा था ना, क्या नाम था उसका? मॉन्टी बोलते हैं चलो उसको, जो अपनी मम्मी के साथ आया था. उसका फटीग ठीक करने की दवाई है ये. CZ. यार देखो इसमें एक चीज़ देखनी है. गेम प्ले में लिखा है सेट की वाइंड. ये देखो इधर पे इन फाइट स्विच टू मीली वेपन Z से है, स्विच टू रेंज्ड वेपन C से है. और हमारे पास वो वाली रिवॉल्वर भी है. अच्छा उसका ब्लड जमा दिया मैंने. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया. ओके ये कौन है भाई? तुम्हारे पास सीक्रेट केस मिला है. ओके वाह. ग्लास वायल क्विनीन मिल गई. क्विनीन यस फाइनली we got some quinine guys. This key will surely grant me access to the basement.
सॉरी अबाउट दैट, गॉड ब्लेस मी। मॉर्ग की अंडरग्राउंड की मिल गई है। 2 बॉटल ऑफ अल्कोहल, 2 bottles of alcohol lol, 2 bottle of alcohols बोला मैंने। never mind guys, let's go find something else। ये क्या है? शॉटगन शेल मिली है और वो मिला है। खत्म कर दिया। यहाँ पे कुछ सिक्के पड़े हैं, ये उठा लो। अबे कितने सिक्के उठाए? 2 shillings, इतने सारे दिख रहे थे वो। भाई साहब क्या खतरनाक खून उन बहा के मारा बेचारे को। गोल घूम के आएंगे क्या हमारा वो खून वैसे ही पड़ा होगा? नहीं, थोड़ा तो चेंज वो हो ही जाता है गेम्स में। थोड़ा तो डिफरेंस है ही। और ऊपर चल के देखें, यहाँ कुछ नहीं है। वाटरी रिच ब्लड सैंपल, चलो। आई थिंक ऊपर नथिंग टू सी हियर बॉयज। कुर्सियाँ तोड़ने के अलावा कोई काम है तुम्हारे पास? कुर्सियाँ तोड़ते रहते हो। चलो, कहाँ कोई है क्या? The door has been unlocked. Ferrous tartrate और सोडियम हाइपोक्लोराइट चाहिए मुझे। These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. क्विनीन मिली इसके पास से, नाइस। वाटर सैंपल, शॉटगन शेल्स भी मिल गई। अच्छा, ये सामने वाला दरवाज़ा ही नहीं है, आपको मुझे लगा दरवाज़ा है। वहाँ कुर्सी रखी हुई है। अपन यहाँ से आए सीधे, इन दोनों को मारा, दोनों का ब्लड सैंपल ले लिया। एक बार गोल घूम के देख लो। चलो, पांच लेवल वाले बंदे। एक और बंदा था ना पीछे। बेचारा कितनी जल्दी मर गया। क्विनीन मिली और यहाँ कोई है तो नहीं। मिरर में कैसे दिख सकता है कोई वैम्पायर? झूठ है, मिरर में वैम्पायर्स नहीं दिखते ब्रो। ये कौन है? Office of Pembroke Hospital, medical examiner, report of investigation. Dissident Samuel Connor, race Caucasian, 39 male, fisherman, type of death natural, fast progressing pneumonia by virus induced pulmonary consolidation भाई साहब, Spanish influenza। अच्छा, Dr. Cochran Tippett's nurse Gwyneth Brannigan, okay. Dr. Cochran. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Oh, ये डॉक्टर
वो न्यू इन्वेस्टिगेशन मिल गई हम लोगों को। तो डॉक्टर कॉर्नर ने कुछ गलत किया है। यूज्ड नाइफ मिला हम लोगों को कोई सा। ब्लड एब्जॉर्ब, you just acquired a new type of offhand weapon, equip it and press to directly absorb blood. Wow. एक मिनट। offhand weapon. Oh, nice. मेरे पास है तो एक शॉटगन वो कर लेता हूँ मैं इक्विप। ये 58 डैमेज है, 99 डैमेज ही है, 65 डैमेज है। चलो मैं यही वाला करता हूँ। डिटेल्स लेवल 2 भी कर देते। अच्छा अभी समझ में आया, यहाँ से वेपन्स वो करते हैं। मैं इतनी देर से वही गलती कर रहा था। इक्विप क्यों नहीं हो रही है? ब्लेड कैन बी माउंटेड ऑन लॉन्ग वुडन स्टिक, वेपन एबिलिटी पैरी, equipping with a two-handed weapon will unequip your off-hand weapon. अरे तो भाई equip क्यों नहीं हो रहा है ये? Only this can be equipped. Why? हाँ अच्छा हो तो गया equip. 65 damage, 58 damage. Stamina 20, attack speed 10, attack speed 15, attack speed 5. तो फिर यही लगे रहने देते हैं। कॉमन मेशिटे को हम लोग वो कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं। लेवल 2 इंक्रीज डैमेज डेल्ट बाय 10% या फिर डिक्रीज स्टैमिना कंजम्पशन बाय 10%। डैमेज बढ़ा लेते हैं। अबे तो लेवलिंग अप, यू कैन ओनली अपग्रेड योर वेपन यूजिंग द हाइडआउट्स वर्कबेंच। अभी समझ में आया। ऑफ हैंड वेपन स्लॉट में हम लोग रिवॉल्वर ले लें। 10 15 6 10 10 10 2। इससे स्टन हो जाता है रिवॉल्वर से बंदा। सॉर्ड ऑफ शॉटगन से मोस्टली यूज्ड एज अ शॉर्ट रेंज डिफेंसिव वेपन। चलो ये ले लेते हैं। सीरम्स हमारे पास कुछ है नहीं, वी कैन नॉट इक्विप देम। 1 2 3 4 थर्ड वाला स्लॉट एक खोलना पड़ेगा कुछ। 5 अल्टीमेट का स्लॉट है। नाइस, चलो धीमे धीमे वो करते हैं। सो वेयर वर वी? यहाँ जाना है हम लोगों को। मेन क्वेस्ट हो गया है। सक्सीडेड आइडेंटिफाई एंड कन्फ्रंट द वैम्पायर हु क्रिएटेड मी। ये तो फर्स्ट वाला क्वेस्ट है। अरे हाँ, सेकंड वाले में फाइंड सम फेरस टार्ट्रेट्स, फाइंड सम सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओह ओके। ओके ठीक है, ये अभी यूज़ करेंगे, कोई बंदा आएगा तो। दो दरवाजे हैं, किस में जाएं? इसमें चलता है। ये क्या मशीनें रखी हुई हैं? What? ये तो हम लोग बाहर निकल गए उधर से। फिर स्टार्ट रेट। Here I found some shillings.
बट आई नीड फेरस टार्टरेट गाइस, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। यहाँ कुछ रखा था, नहीं है यहाँ पर। एफ 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 स्पैम करते हुए जाओ। एफ 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 एफ। ओ भाई साहब, किसी का मुंडी रखी हुई दिखी तुम लोगों को? दिखी? देखो पास से। ऐसे मारा बंदा करते हुए। ये वाले इसमें चलते हैं गेट में। वाह, यहाँ पर तो ओ जॉन डो। अबे नहीं, भाई साहब 7 लेवल वाले बंदे। भागो 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 दोस्त, भागो 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 भागो। These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. भाई साहब भाग गए वो। To drink blood is so tempting. To drink blood is so tempting. चलो कुछ मिला यहाँ पे। Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. चलो भाई साहब, ये जॉन डो तो बहुत खतरनाक था। एक ये मर गया, दूसरा वाला कहाँ गया जो बड़ा वाला था, जिसकी नीचे एचपी लिखी आई थी? वो वाला बंदा हमारा मेन विलन है। यहाँ पर कुछ है जो हम उठा सकते हैं। अब हमें फेरस टार्टरेट चाहिए। रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन वैम्पायर बहुत खतरनाक है। एनिग्मेटिक फॉर्मूला मिला है एक नया, +2 रिच ब्लड सैंपल। ये बंद है। यहाँ पर क्या बना सकते हैं हम लोग? इसका क्योर। फेरस टार्टरेट नहीं है ना? सीरम, सीरम बनाने के लिए भी फेरस टार्टरेट चाहिए। Regenerate 300 health points instantly, then 150 health points over 15 seconds. Okay. एक मिनट, वर्क बेंच पे वेपन वगैरह भी अपग्रेड होते हैं ना? चलो ठीक है। वेपन ये वाला, ये वाला। इसको अपग्रेड करने के लिए एल्यूमिनियम शार्ड और एल्यूमिनियम पाउडर यही लगना है। इसमें डैमेज इंक्रीज टिल इंक्रीज बाय 64, 10% डैमेज इंक्रीज कर दिया। अरे यार, एल्यूमिनियम पाउडर और चाहिए। तो 64 हो गया डैमेज ना, पहले कम था। लेवल 2 से लेवल 3 करने के लिए, लेवल 2 करने के लिए भी नहीं है हमारे पास तो अभी पैसे। पैसे नहीं, एक्सपी नहीं है हमारे पास। रिसाइकिल करेंगे स्मॉल बॉटल। अच्छा, सिगरेट केस को रिसाइकिल करते हैं। मुझे एल्यूमिनियम शार्ड मिली, इसके कारण ग्लास वायल मिलेंगे। 2 स्प्रिंग मिलेगी, 3 ग्रीस और स्क्रू मिलेंगे। चलो ये हो गया। इसको रिसाइकिल करने से फेरस टार्टरेट मिलेगा। ओके, बॉटल ऑफ अल्कोहल रिसाइकिल करने से। ठीक है ठीक है। फाइंड सम फेरस टार्टरेट लिखा है, लेकिन
You have enough components to craft a medicine, treatment और serum. एक फटीक वाली मेडिसिन क्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन क्विनीन हमारे पास कितने हैं? अरे सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, मतलब उतना ही है. वो बंदे को हील करने के लिए बनाए हैं अपन क्या? फटीक हील करने वाली. ड्यूरिंग अ डायलॉग. चलो बाद में करेंगे, या फिर वो वाले बंदे के लिए बना ही लेता हूँ यार. काम खत्म करो. सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं, दिस वर्क बेंच विल नॉट गो एनीवेयर. हम लोग पहले स्टार्ट रेट हमें ढूंढना है. फाइंड आउट हु इज बाइंग ऑन थेल्मा. अच्छा वो हो गया. चलो बना लेते हैं, उस बंदे से नई चीज़ें पता चलेंगी. चलो एक फटीक की दवा बना ली है मैंने. कूल. अब निकल लो भैया, इससे पहले कि जॉन डो आ जाए. निकल लेते हैं यहाँ से. ये तो वही बंदा है. Find useful medicinal ingredients in the old morgue. अरे अरे अरे, हेलो 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 हेलो. मारा मुंह में उसके. सो एक मिनट इधर आओ. अब इधर जाके ब्लड सैंपल उठाओ. एक मिनट. सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन मिल गया इसके पास 6. वाओ. एक और चीज़. वेपन के लिए वो ख़त्म हो गया ना मेरे पास आमो. चलो अब रिवॉल्वर चला लेते हैं फिर थोड़ी देर. रीलोड कैसे करता है ये? ओह ऐसा रीलोड नहीं करता है ये. चलो बाहर चलेंगे. Diseases. 6 citizens can be healed with the appropriate treatment. A healthy citizen helps contribute to raising the health status of the district they belong to. Okay. Status healthy. ये कौन सी जगह है? ये मॉर्ग है ना? एंड ये क्या है? ये मॉर्ग है कि वो मॉर्ग थी? आई थिंक यहीं से तो आए अपन. नहीं ये हॉस्पिटल है. चलो चले वो वाले बंदे को फटीक की दवा दे तो कुछ नया पता चलेगा. कहाँ था वो बंदा? ये तो वो है. सिंपल्टन दीज नर्सेस ब्रेड विद नो समथिंग. क्या लिखा था पता नहीं. वो वाला बंदा ढूंढना है मुझे यार, जिसको फटीक की दवा देनी थी. लेफ्ट में कहीं पर है ना. रिजर्व कर रखा था इसके लिए बेड. हाँ ये रहा बंदा. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Mortimer. Press E to check medical status of the citizen. Healing a citizen will increase the blood quality and will reward you with XP. The health status. हाँ ये तो पता है भाई. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Give medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. ट्रीटमेंट को फटीक दे दिया. हाँ इसको ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद भी. About your hospitalization you unlock. Why did your mother have you hospitalized here? My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Okay.
रिकवर हो रहा है, ओके ठीक है. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. रिकवरिंग नो ब्लड लॉस, ठीक है. फटीक ख़त्म कर दिया इसका. लेवल 2 पे आ गया ये बंदा मेरे लिए. ये लेवल 4 पे है अभी. ओके, इसकी 2 हिंट्स और निकालनी है. Waste your time with me. You always knew the words to calm. इसमें Good कुछ evening, नया Doctor. ओपन हुआ. पर्सनल क्वेश्चंस में कुछ नहीं. हिंट रिक्वायर्ड है. लंदन में कुछ कंप्लेंट्स अबाउट योर रिसेप्शन हियर. हिंट रिक्वायर्ड. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये पूछ चुका हूँ मैं. टेल मी अबाउट What योरसेल्फ. can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ओह हाँ, ये सब पूछ चुका हूँ मैं. चलो चलो. थैंक यू वेट्रेस. Goodbye, Mrs. Goswick. मिसेस बोला और नीचे मिस लिखा आया था. Nice sweet girl. Reads me like a... Good तुमको evening, क्या Mr. चाहिए? Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? तुम्हारा ऑपरेशन क्या हेल्दी है ये? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Your life in London नहीं पूछ चुका हूँ. इससे पर्सनल हिंट रिक्वायर्ड. चलो बात. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. ग्लास वायल मिले यहाँ पर 4. फाइंड यूजफुल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स इन द ओल्ड मॉग. अभी भी है. अनफिनिश्ड लेटर. पेम्ब्रोक हॉस्पिटल, sick, 2 of November. My dear children, sorry I did not write to you before, but it hurts like hell just to write these few words on bloody paper. Don't worry, Daddy will go out of the hospital as soon as the doctors fix his arm. In the meantime, if you need something, go see Mr. Chadwick at the construction site and tell him you are Harvey Fiddick's children. Fiddicks, okay. You remember Robert Chadwick, the big guy with a mustache who helped me repair the house doors last spring. Go see him and ask for a few bob. What is a bob? He won't refuse to spare you a few. I'm sorry I can't work anymore for now, but we'll figure out something as soon as I'm out. Don't worry, everything will be fine as soon as Daddy's arm is strong again. As soon as the doctors have fixed my arm. मर गया क्या? उसके बाद क्या हुआ बेचारे को? बहुत बुरा लगा. Death report, photography in wallet, article on econs. हाँ यही तो था. इसके बाद mesmerization का क्या पढ़ रहे थे अपन जो छूट गया था? A vampire I interviewed even told me the more a subject tries to resist, the more permanent the damage will be, as if the vampire could literally fracture their target's psyche. A vampire can bend a mortal to their will, and they can even break their mind. ठीक है. Permanent damage will be. More subject tries to resist, the more permanent the damage will be, as if the vampire could literally fracture their target's psyche. Okay, psyche. The same vampire explained to me that this ability required time to master, and that the result could vary widely from one subject to another. Implant a false memory, erase a painful one. The possibilities are endless and frightening. Blood awareness. This may be the most catastrophic ability of all concerning vampires, since it is the cause of so many tragedies for them and us. Vampires crave for blood. They must use their will to restrain themselves from frenziedly drinking every drop of blood they can see. They need blood to function and to express their full supernatural traits.
A famished vampire can be very weak, even if he cannot die of hunger or thirst. This urge, this need for blood may explain why a vampire is so aroused by it. A vampire confessed to me that blood could sometimes blind him, since its smell and attractiveness can be so strong. When he focuses, a vampire can almost see blood all around them, inside warm bodies, through walls, on a supposedly clean weapon, etc. The same vampire even told me that he can see if a mortal has clean blood or is ill, and that in some cases he can even sense diseases, infected clothes, or even items in a room. Okay, if this is true, it could have so many medical applications, it almost beggars belief. ये तो गड़बड़ हो गया. It could have so many medical applications, it almost beggars belief. कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में. मॉग की है हमारे पास, मॉग अंडरग्राउंड की है हमारे पास, शेल्टर की है. ठीक है चलो. My sweet girl. हार्वे फिडिक के लिए नई हिंट मिली. हार्वे विल नॉट बी एबल टू फीड हिज फैमिली एज लॉन्ग एज हिज आर्म इज स्टिल इंजर्ड. चलो, और हार्वे के बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी हमें? डॉक्टर वेवरली एक्रॉइड इससे मिलेंगी. ठीक है. अच्छा, ये वो वाला डॉक्टर नहीं है, वो दूसरा डॉक्टर था. स्वांसी, राकेश चंदाना और पिपा हॉकिंस. पिपा के पास चलते हैं, पिपा से हम लोग कुछ नई चीज़ें निकलवा पाएंगे. ये रिकवरी हो रही है इसकी. Reads me like a book. चलो, इससे वापस हम लोगों को वो मिला. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Personal questions. You seem worried about. You seem worried about the safety of your family. And it's That's what I see obviously the happening. reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. About the death of your wife. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. So many died during the bombings. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. Oh. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. बेचारे. नहीं, इसको नहीं मारेंगे अभी बेचारे को. मैस्मराइज कर सकते हैं इसको, ले जा सकते हैं अपने रूम में. You always knew the words to... Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? इसका पता भी नहीं है ब्लड क्वालिटी कैसी है. ब्लड क्वालिटी कैसी है इसकी ब्लड क्वालिटी 850 एक्सपी. नहीं, एक बार इंटरनल लॉक करेंगे उसके बाद मारेंगे इसको. पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट योर वाइफ्स डेथ, ये तो कर चुके हैं. Tell me more. 1915. What happened? How are your children after losing their mother? They were smaller then. चलो, ये चीज़ अच्छी है कि फास्ट फॉरवर्ड कर The only सकते good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. हैं. एक हिंट और अनलॉक कर लेते हैं, फिर मारेंगे इसे.
F पे क्या है और LD बना के मारेंगे या ले चलें, क्या बोलते हो? 850 XP मिलेगा यार, एक बंदे को तो मारना चाहिए ना, एक को हील करे तो एक को लेके चलते हैं। कम विद मी, चलो चलें। अरे नहीं यार, लेकिन बेचारे के बच्चे हो जाएंगे यार, अनाथ हो जाएंगे इसके बच्चे। डैम मैन, बहुत बुरा लग रहा है इसको मारते हुए। और एक हिंट भी अनलॉक नहीं करी थी, लेकिन आई नीड ब्लड। बिल्कुल बिल्कुल, बेचारे को एम्ब्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। All I wanted was to go back to work, to take care of my children. Oh damn, कितना बुरा लग रहा है उसको मारने के बाद। Rest to evolve. The district will soon suffer. Crumpled letter. Dear love, I finally found the missing money for the fee asked by the ambulance driver to bring you to the hospital. Don't worry about nothing now, except getting better. For I took care of everything. I asked some of our neighbors and they told me that this Mr. Hooks is something of an honest crook. He may ask for extra money in exchange for a bed, but the bed is then guaranteed. I'm sorry I refused to pay first, and I realize now that the important thing is that you get better soon. The Pembroke Hospital is a good place, I heard, despite the bad behavior of this Milton Hooks. I promise you that everything is okay now. I'll see you in your clean bed as soon as possible. With fondest love, Nikolai. Okay, Nikolai. Milton Hooks अभी तक मिला नहीं है, लेकिन Milton's reputation is mediocre among his colleagues. Milton runs rackets on some of Pembroke's patients. Okay. सोशल सर्कल में इसके पेपा हॉकिंस है। पेपा हॉकिंस देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्दी है अभी, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को मार मार के हम लोग डिस्ट्रिक्ट को अनहेल्दी करेंगे। अभी हमारी हेल्थ सब कुछ फुल हो गई। I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. ये चंदा ना पता नहीं क्या करता रहता है बाहर बैठ के। चलो ये फिर मेरे हिसाब से वी फिनिश्ड एवरीथिंग इन चैप्टर 2। फाइंड सम फेयर स्टार्ट रेट नहीं कर पाए ना अपन। फाइंड यूज एक बार वो भी कर ही लेते हैं। कहाँ जाना है? स्क्रू मिले तो not here, bro. We have to go this way, most probably. Black wall. District state is serious. Uh-oh. I can't believe I'm doing this. Over there! There's one of those burning! रिवॉल्वर अच्छी चलती है। एक मिनट रुको बेटा जरा। 4 नंबर पावर इसीलिए तुम्हारे लिए ही है। ओ नहीं यार, डैम। You have been defeated. That is not a wicked thing. A true punishment would be never. What? Loading voice.
मॉर्ग चलते हैं पहले। टाइट्रेट ढूंढना है ना, वो ढूंढ कर आते हैं। Merchant prices for their goods may vary depending on their district's health status. The old Morg district is healthy. कहाँ पर चेक नहीं किया था हमने जो हमें वो नहीं मिला है। क्या ढूंढना बचा था? फेरस टाइट्रेट ढूंढना था हमें। एक बार ऊपर देख के आते हैं। इस फ्लोर पे से ऊपर हो गया, फिर नीचे चलते हैं। Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. यहाँ पर तो सबको मार के गया, फिर से कैसे पैदा हो गया ये बंदा यहाँ पर? और भी बंदे हैं यहाँ पर। फिर स्टार्ट रेट ढूंढो जल्दी से। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, खाली कमरा। चेक दिस कमरा। अरे तुम कहाँ? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिला है फिर से। फिर स्टार्ट रेट, वेयर आर यू बड़ी? ऐसे ही किसी कमरे में मिलेगा, ऐसे रखा हुआ टेबल पे। इस जगह पे वो नहीं है बिल्कुल, एक भी दरवाजा नहीं खोल रहा। 1875 XP वॉइस, बहुत सारा वो कर सकते हैं हम इससे। लेवल अप। I don't see anything, I don't see anything, I don't see anything, I don't see anything. Let's go to the basement then. आजा बेटा इधर। ये बंदे वापस अपीयर हो जाते हैं। उस समय भी 2 मिले थे। सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना सारा हो गया हमारे पास। I killed another one here, one here, and इसको मार के हमें कुछ मिला। अच्छा, वो वाले कमरे में जा सकते हैं हम अब।
ही सही है। इसने कुछ ड्रॉप नहीं किया? किया किया किया। It's locked. अबे इसकी चाबी कहाँ से मिलेगी? इसकी चाबी चाहिए ना। चलो अभी फिर से जॉन डो मिलेगा मुझे लगता है यहाँ पर। नहीं मिला। नहीं है नहीं है नहीं है, जॉन डो नहीं है यहाँ पर। फिर स्टार्ट रेट। एक बंदे की आवाज और आ रही है कहीं पर, तो एक वो और है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, जब कुछ भी नहीं है। एक चाबी मिल जाती है वो वाले केस की। मेरे हिसाब से चैप्टर 2 इज डन बॉयज। आई थिंक चैप्टर 2 इज डन हियर। जिसकी आवाज आ रही है वो बंदा मिल जाए ना, तो मुझे लगता है I'll get everything whatever is needed. अरे अरे भाई साहब, 5 लेवल का बंदा आके छेड़ गया मुझे। अच्छा, एक फाइंड आउट हु इज स्पाइंग ऑन थेल्मा, ये भी चीज़ कंप्लीट करनी है। ये दोनों हो गया, ये वाला गेट हो गया। एक बंदा और होगा कहीं। यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। तो पेम्ब्रोक में कहाँ रखा है वो? जॉन डो को मार के ही मिलेगा क्या? आई डोंट थिंक फेयर स्टार्ट रेट है यहाँ पर। ये आवाज आई, कोई तो है, कहीं तो है। ये रहा। ठीक है, वॉच मिली है। सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला है। अभी भी और ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पर। ज़ॉम्बीज़ नहीं, वैम्प्स, या क्या बोलते हैं उसको, ईवल्स, ईकैंस।
क्या बोलते हैं उसको? ब्लड 11/100 है। ब्लड चाहिए हम लोगों को। इकॉन्स बोलते हैं। कहाँ से आवाज आ रही भाई? कहाँ पर हो तुम? बताओ तो मैं आके मिल लूँ तुमसे। ये वाला नहीं तो पुराना पीछे वाला गेट है। अरे यार नहीं, बाहर नहीं जाना है। गाइस आई थिंक मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। ओके गाइस, वेलकम बैक। चलो चालू करते हैं यहाँ से। मुझे लगता है फिर स्टार्ट रेट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। वॉच से क्या मिलेगा? स्प्रिंग, स्क्रूज और ग्रीस। स्मॉल बॉटल से वायल बनेंगे। ग्लास वायल की जरूरत नहीं है अभी। डैमेज इंक्रीज करी जाए।